चलिए, just open up your videos for 30 seconds. Recording शुरू कर दिए for marking your presence. Then put off and then I'll start sharing your this thing screen. जीनत जी, वहां पे भी गर्मी है क्या? पंखा चल रहा है आपके? तो ये भी नीचे भी स्वाति मोरे, वाह, चारों तरफ गर्मी है। अर्शी जी, आपसे माफी मांगूंगा, अर्शी चौहान डीपीएस, क्योंकि मैंने आपका दो चीज देखी। चौहान CHOUHAN भी है, अब मैंने CHOU लिख दिया तो वो मेल वापस आ रही है। अब दीप्ति कौशिक जी हैं महसाना से, ज्योति जी हैं, देखिए मुस्कुरा रही हैं मन मन। दिस इज जस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मार्किंग योर दिस थिंग अटेंडेंस। सोनाली जी है, दैट्स गुड। अंकिता सैनी जी हैं। चलिए मैम, मैं शुरू करता हूँ फिर। देयर आर नाउ 20 पार्टिसिपेंट्स। 20 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आते रहेंगे। वो 20 थे, अभी 19 हो गए। कनेक्टिविटी का इश्यू होगा कहीं। मैडम, सारे 55 में से 35 की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। वैसे मौसम यहाँ भी खतरनाक हो रहा है। ओके, वी शुड स्टार्ट सो एज टू फिनिश जस्ट लाइक यस्टरडे विद इन 40 मिनट्स, और इससे ज्यादा है भी नहीं। सेम वे आई एम नाउ शेयरिंग द स्क्रीन। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स फॉर होम असेसमेंट। और बेसिकली हमको वी जनरली वंडर कि ये है क्या रूब्रिक्स, इसको किसने ढूंढा, किसने डिस्कवर किया। उसको हम लोग गालियां भी देते थे कि यार क्या है ये। These type of scientists keep on, education scientists keep on devising new assessment tools और फेंक दो। ये नहीं पता कि आगे आने वाली जनरेशंस कितना मतलब ट्रबल फील करती है राइट इन द बिगिनिंग। देखिए, रामायण है, महाभारत है, कोई भी धर्म ग्रंथ ले लें आपके, तो बचपन अपने बच्चों का देखिए। व्हेन दे आर 1 year, वो कहते ठुमक चलत नंदलाल। तो बच्चा पैदा होते के साथ ही तो रनिंग नहीं करता। एंड दीज आर द माइलस्टोन्स ऑफ देयर लाइफ। सो रूब्रिक्स भी उसी तरीके से है। दिस रूब्रिक इज अ स्कोरिंग टूल, specific expectation as per their age or their learning level. कल हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में किया था, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखनी है। एंड देन आफ्टर देयर एप्लीकेशन नाउ वी हैव टू सी देयर असेसमेंट। जब आपके क्वेश्चन पेपर बनाने में मास्टरी हो गई, अगर आप शुरू कर दें क्वेश्चन पेपर बनाना, विद इन 1 month यू विल बी द मास्टर। चाहे वो बोर्ड का भी पेपर होगा, यू विल नॉट टेक मोर देन 1 hour टू मेक अ पेपर ऑफ होल टेक्स्ट बुक। अभी तो आपके पास you might be having only limited, what do you call, syllabus. Then rubrics is, it is a set of clear expectations कि what exactly I expect from you. जैसे वो बॉर्नवीटा का एक आता है कि आप तो कह रहे थे बॉर्नवीटा में एनर्जी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं वही हूँ। फिर वो उसका कोच बोलती है वो लेडी कि yesterday you were there at the mark 20, today you are here and tomorrow think about where you will be, which means practice. एक बार में नहीं बनेगा, रूब्रिक्स भी नहीं बनेगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हर सब्जेक्ट का दूंगा आपको। सो इट इज एन असेसमेंट टूल, इट इज a स्कोरिंग टूल एंड इट इज टेलर्ड फॉर ईच असाइनमेंट। ऐसा नहीं है कि वन रूब्रिक विल बी वर्किंग फॉर all of them. One rubric will never be able to give you the insights into the performance of a child on all the dimensions. So it is specific, tailored. It can be used for marking assignments, class participation, group participation, overall grades, cooperation, collaboration, जो हमारी 21st century skills हैं। स्किल्स यही पहले भी थी, बट अभी उसका डेफिनेशन करना पड़ गया लोगों को, बिकॉज द थिंग इज दैट कि दे वर नॉट वेरी क्लियर। अभी 21st century स्किल्स का मैंने जब वेबिनार लिया था, देयर आर कंसीडर्ड टू बी ओनली 12,
But now the people are adding financial भी होनी चाहिए, gender भी होनी चाहिए. So होना तो बहुत कुछ चाहिए, but these 12 are basic ones. So they are tailored to adjust to each and every requirement. And then students can use for self-assessment. उनको अगर हम एक rubric बना के दे दें, एक पेपर पे बना के दे दें, this is your performance level, and you just keep on self-assessing yourself exactly as to where do you understand, where do you stand today, where were you yesterday, today what is your performance level, and tomorrow what you want to achieve. Through this rubric, start practicing on that particular dimension. Next is purpose. What is the purpose? अभी मैंने बताया आपको, it is assessment tool, it is a scoring tool. So it is to grade the students on defined goals, predefined goals. Because to assess students' performance of work, assignment, even homework, what do we want to do? Then we have to design it. और एक बात मैं बताऊं आपको कि first you start by writing the various performance levels. 5 mistake 1 mark, 4 mistakes 2 mark. ऐसे करके आप उसको, मैं एग्जांपल दूंगा, it will be more clearer to you. And then what type of rubric, क्योंकि rubrics के टाइप भी होते हैं, अभी आगे आ जाएगा how many types of rubrics are there. देखिए, हम जब जनरली बात करते हैं किसी दो just give me 1 second, I'll put on the light, it has come up now. I'll just far better. जब भी हम किसी दो आदमियों को, दो बंदों को कंपेयर करते हैं, सो व्हाट वी डू इज कि ओवरऑल हम उसका अपीयरेंस देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, हाउ डू ही इंटरेक्ट, हाउ डज ही इंटरेक्ट, हाउ डज ही स्पीक्स, हाउ डज ही वॉक, ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. बट कंपैरिजन के लिए देन वी से ही इज अ टॉल फेलो, उसकी आवाज लेकिन पतली है, पर्सनैलिटी अच्छी है, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक अच्छा लगता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So what type of rubric? Two types are there, analytic and holistic. जैसे holistic तो means as a whole, और analytic मैंने कल आपको बताया था taxonomy में, Bloom's taxonomy, to break down the things into various components. मैं अभी आपको example दूंगा. Next is components क्या होते हैं rubric के? First is the criteria. दो बंदों को हमने कंपेयर करना है. What is the criteria of comparison? Their height, their weight, their profession, their salary, a number of things. You just find out the criteria. Then next is level of performance, the degree or extent to which a student is expected to perform or to meet a given criteria. And then descriptors, level bata diya humne, and then we describe them. What is the criteria? And specific explanation to the level of performance, the characteristics associated with each dimension. अभी आते हैं दोनों के ऊपर. मैंने अभी बताया था आपको, there are two types, analytic and holistic. अब देखिए analytic क्या होता है, the level of performance for each student. इसको मैं अलग कर दूं so that you can gain in your, yes, to analyze the analytic rubric is the level of performance for each component, each criteria. Say for example, if you give a homework or assignment to the class to create a story on the given topic, कल भी हमने इसका एग्जाम्पल दिया था. Then what are the things you will be checking there? First, storyline, grammar, comprehension, idea,
moral or conclusion. Everything is clear, perfect. Idea is clear, but comprehension is, grammar is not correct, spelling is not correct, everything is right, but handwriting is not legible, number of things. So this is analytic. Analytic rubric is advantage. Different strength, areas of strength and weakness you can find out. It can be weighed to reflect the relative importance of each dimension. And if the student comes to know everything is correct, but I am not able to use the grammar in a particular way, so then he can improve self-assessment and then improvement on that particular part. But the disadvantage teachers के लिए है कि it takes more time to develop. And number two is क्योंकि criteria अलग अलग है, so the raters, the evaluators, they may not reach on the same score. कभी होता भी नहीं है. आप एक ही एग्जाम शीट, बच्चे की आंसर शीट 5 फोटोकॉपी करवाइए और उसी सब्जेक्ट के 5 टीचर्स को दे दीजिए, पांचों का आप देखेंगे कि देयर स्कोर्स आर डिफरेंट, क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग दैट व्हाट यू कॉल rubric. Even rubric भी करेंगे, still they are not able to utilize properly. Next is holistic. Multiple criteria, लेकिन जब हम उनको इवैल्यूएशन करते हैं, then we do it as a whole, in wholeness. Wholeness means a single dimension, specific feedback on defined and single dimension. But when we are going to put the result, it is as a whole. Advantage क्या है? It saves the time since the number of decision raters make is minimized. So it is a time saver type of rubric. And disadvantage क्या है इसका? It will be maybe difficult to select the best descriptors, specifically or especially when a student work at a varying level. And then criteria can be varied. Which one is heavy or which one is light? Which one is important? Which one is less important? This is the disadvantage. और benefits मैंने अभी आपको पहले भी बता दिए हैं. It help clarity. Students के लिए भी, teachers के लिए भी, self improvement, understanding your expectation. On their self assessment, it may inspire the students to perform better. Then it makes the scoring easier and faster. शुरू में आपको 1 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद you don't have to create a rubric in written. It always creates over here in your mind. क्या चेक करना है? और क्राइटेरिया आर हियर, लिख लेंगे सिर्फ उनके टाइटल्स. अभी आप कोई सर्वे देखें, गूगल पे बहुत सर्वे आते हैं, 10 पॉइंट्स स्केल. हाउ डू यू रेट आवर ऐप? सारी एप्स में जब भी आप कोई परफॉर्म कर लेंगे, हाउ डू यू लाइक, अभी आप व्हाट्सएप कॉल करें एकदम से आ जाएगा. What in your views is the quality of voice? देखिए आप. So it makes scoring accurate, unbiased and consistent. मैं कभी किसी को रेटिंग 4 से ज्यादा नहीं देता. To leave this, to leave some space for them to still improve. नंबर 1 कभी होने की कोशिश मत करना. नंबर 1 के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, उसके ऊपर कोई जगह ही नहीं है. So always be number 2. Try to be on number 2 to become number 1, but don't become number 1. Reduce arguments with the students. मैडम मेरे नंबर इतने कम है, उसके ज्यादा है, हमने एक ही लिखा है. देखो भाई, क्राइटेरिया देखो, स्पेलिंग देखो, ग्रामर देखो, कॉम्प्रिहेंशन देखो, हैंड राइटिंग देखो, स्टोरी लाइन देखो. You can give all the criteria. See over here, it is all in black and white, and it gives
feedback to the faculty and staff, improving it. They are well defined. मैंने अभी बता दिया आपको. They are content specific. जो भी performance level है, जो भी product है, और जो भी subject है, we have got defined, well defined specific objectives. As to this we have to check. Nature में how many green colors are there? If we ask a student of second class what is the green color, he may pick up the green thing. But when you take them for a nature walk and then ask them, find out green colored objects, all different green. They are all green, but different from each other. So then we see they will be gathering leaves, grass, a number of leaves from different plants, and all of them are green, but up to different level. And they are viable for instruction. Green. But what type of green? Grass green, bottle green, fungal green, moss green. What type of green? So they are content specific. Next is they are finite and exhaustive. Scoreable है, measurable and exhaustive. 5 criteria आपके पास है. I tell you one thing. I used to have create a rubric for the selection of books by the teachers. These are the criteria. Give them to all the subject teachers. Hindi teachers, Hindi ka. English teachers, English ka. Mathematics, mathematics. Each teacher will have evaluation sheet on that rubric of up to the level of his or her understanding of the concept on what is the criteria of selection. And then everybody gives the report to HOD. HOD discusses with me, recommended, sir, this publication is best. It is written in black and white. They are well ordered. Learning progression जो है वो आपका well defined है. Level 1 से लेके level 5 तक जाने के लिए what are the different things I have to add to my learning so that I can improve from 1 to 2 to 3, 4, and then top level 5th. And it is coherent with competitive or cognitive complexity of the subject. अभी देखिए एग्जाम्पल. एनालिटिक में टास्क डिस्क्रिप्शन ये चार्ट ऐसे होता है. Level 1 is the lowest one, level 5 is the highest one. Criteria on the right hand side. And then you write analytic है ये. Criteria you will be writing. Just see my pointer. Over here, number 1. You will write 1 here, 2 here, third criteria here, fourth criteria here. Right? And then move on. So task description in those horizontal column, the top one, assessment criteria is on the top one, performance level is underneath. So this way, this is the analytical, that is descriptive rubric. And the next one is holistic, which means आपको सारे के सारे basically holistic is the sum total of the components, which means analytic तो होना ही पड़ेगा, but your report will be in totality. Overall description of level 1, 2, 3. You define all these descriptions, overall description of performance and then report. अभी किसी टीचर ने मेरे से मांगे थे, she is an English teacher and she wanted कि सर report card remarks मेरे को थोड़ा से example दीजिए. Now the thing is that कि मैं कैसे example दूंगा? I can give you limited example. Say for example in language, English, क्योंकि मेरे रिसर्च तो मेरे को भी करने का मौका मिला ना. Vocabulary भी हो सकती है, spelling भी हो सकती है. Order of this, which word will be coming first in the dictionary. So that depends. A number of criteria will be there. Now, I have given you all the things, the benefits and advantages, disadvantages, everything. Now, designing your own particular is the first one.
First, we need to think the content, the task, and the level of the student. What we what do we intend to teach? And what is the purpose? That means objective of the lesson. And how do I assess? What is the purpose of assessment? Whether it is for the official purpose of report card, or is it the assessment only for the purpose of informing the student as to what are the different criteria on which he has to put in more emphasis to improve. And what do we want from our students? This is first. So then listing the learning outcomes, the particular details of learning outcomes and objectives, दोनों का मैचिंग होना चाहिए. जैसे लेसन प्लानिंग हम जब करते हैं, there is a format. The first one is comes unit, then topic, then objective, and then teaching aids, then instruction methods. Number of other things are there. जब करेंगे lesson planning पे webinar, I'll let you know. You will come to know, but don't leave all the groups. At least be present in one of the groups. Leave everybody, every group, but in one you should be there. Then list the particular details of learning outcomes. जब हम पढ़ा देंगे and objectives के साथ उनकी matching होगी. So what do I expect from the students? What level of performance I expect from the students? What how much they must perform? The third step is the organize the result. That is grouping similar expectations together. Say for example, if we are designing an analytic rubric, अभी एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको एक से हर सब्जेक्ट में. डोंट पैनिक. आगे अगली स्लाइड से हम एग्जांपल्स करेंगे 3-4 सब्जेक्ट्स के, एंड दैट्स इट. Determine which expectations are easier and which are difficult. And then the fourth one is rubric design template. वो भी आपको अभी अगली स्लाइड में पता चल जाएगा. Let us see. Construct a model of अभी ये आपकी स्लाइड छूट जाएगी. When you watch it again, you will be finding it difficult to read the content. So I am putting this one on farther right. Now you can see. Construct a model of the digestive system using clay and household items. Use original material, not a store-bought model, to construct the system. अब देखिए इसमें कितनी बढ़िया बात लिखी है. यूजिंग क्ले. डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो पॉटर्स क्ले पहले तो आप बनाएंगे उसका, एंड देन नाउ यू यूज मटेरियल दैट इज अवेलेबल एट होम. अब देखिए सेकेंड वन, कंपोनेंट्स. ऑल मेजर पार्ट्स आर प्रेजेंट. माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, kidney, liver, pancreas, everything is being represented with household material. Like kidney can be represented by kidney beans, rajma, and so on. But then in that case, you have to give them liberty or freedom to choose what they think of material, which material they can use. Next is लेबल्स. आपने यूज तो कर लिया मटेरियल, हाउस होल्ड मटेरियल ही यूज किया है. आपने डिफरेंट कलर्स के बटन्स यूज कर लिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस. बट लेबलिंग आपने ठीक करी है कि नहीं करी, which means written ones. All components are neatly labeled. Fine, that is level 5. Excellent. So you give 20 points. You see, 4-point scale. 5, 10, 15, and 20 the highest. It is just poor. Over here we are writing poor. जब इसको wholesome में हम रिपोर्ट कोई देते हैं, over there we will write he needs improvement in handwriting, labeling. So labels are messy. थर्ड लेवल में आप देखिए fair.
Some components are not labeled or are labeled incorrectly. He didn't use large or small words, but just only intestine. एक ब्रैकेट बनाया, intestine. Properly नहीं हुआ, करा है, but it is not segregated. Still, he has to be given points, so 10 points. So this way we can utilize. Next one is me or map, geography. Come. You ask the student, where do I belong in the map? आप अपने घर को मार्क करिए and then उनको क्राइटेरिया क्या बताना है? Me, my city, my district, my state, my country, my continent and then the world. अब देखिए 1 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट, हमने इसमें 5 पॉइंट्स का डिफरेंस ही नहीं रखा, ओनली 1 पॉइंट. सो आई डिडंट ड्रॉ एनीथिंग और ओनली वन एरिया. मेरा घर कहाँ है मेरे को वो पता है, उसके बाद मेरे को ये नहीं पता सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट. और एक लास्ट में देखिए, आई ड्रू ऑल 6 एरियाज. जहां भी मैं हूं मैंने सारी चीजें, me, my city, my district, my state, the country, the continent, world में तो हम हैं ही, so world need not be mentioned. So there is a person who marks all the areas, all the parts, all 6 parts clearly, so he gets 4 points. Color and label, I color and labeled every area. Now criteria, it is written. पुअर में आएगा आई लेबल, दिस इज सेल्फ असेसमेंट गोइंग ऑन विद द स्टूडेंट. करने के बाद ये चार्ट उसको दिया है रूब्रिक, एंड देन यू असेस योरसेल्फ. देन ही सेज आई लेबल 1 or 2 areas and colored a little, so I'll get 1 point. On the other hand, there is one who colored most of the areas and colored most of the things. Good, 3. And next, कलर भी किया है, लेबलिंग भी की है साथ साथ. 4 points. So this is the way we create. And now the number line. इसमें क्राइटेरिया बहुत सारे हैं और उनके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी है. से फॉर एग्जांपल नंबर लाइन में एक आदमी बच्चा ऐसा है जिसने स्केल यूटिलाइज किया है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, he'll be given 4 points. Most of the time one step is missing, 3 points. Does not follow directions, that means several steps are missing. हमने बताया नंबर लाइन कैसे बनाते हैं. Take a straight line, draw a straight line, center you mark 0. On the left hand side every 1 inch you write -1, -2, -3, -4, -5. On the right hand side +1, +2, +3, +4, +5, every 1 inch after measuring properly. And there is one who draws a rough line and approximation say उसने 5 इधर पॉजिटिव 5 नेगेटिव मार्क्स लगा दिए. What will you do? You will give him 1 mark. 0 नहीं होता है हमारे इस सिस्टम में, आप देखेंगे कहीं भी नहीं होगा 0, nowhere. फोर्थ क्राइटेरिया देखिए, मैंने अभी बोला ना आपको, नंबर लाइन इज नियर बाई ड्रॉन विद मार्कर, numbers are clearly and correctly labeled. That is, मैडम सीमा जी प्लीज डोंट यूज योर दिस थिंग. ये मार्किंग जो है ये आप ही के लिए दुखदाई होगी. So it is drawn, it is very clear. Fourth criteria, 4 points. Whereas number 1, first person is the number line is not neat and numbers are incorrectly labeled. So he will be given only 1 mark. So this way you can develop rubric. ये recording आपके पास कल सवेरे पहुंचेगी. You can see the example specific to your subject and then you can find out where do you stand. Verb. This is the last slide for the day. Use of verb.
subject or and verb agreement. The last performer is the verb does not match action being performed in the picture. You show them an image, a man with this one. He is boxing. Another says he is walking. Third one, he say he is trying to grab something. Normal things. Storyline भी है साथ में. So matching नहीं हो रही. The first one says the verb correctly matches the action being performed in the picture. The verb agrees with the subject. एक story है man eater of Kumao. If you ask them who is the man eater, then they will respond he is a lion or tiger. Yes, okay, fine. Give them 5 points. And the fourth one, last one, man eater is an animal. A rough idea hai usko idea. So he will be given 1 point. Then grammar and mechanics. Sentence is written correctly with no errors. जैसे छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, we need their performance at that level. What is your name? The answer must be, my name is Ajay Sharma. And as they grow up, they forget to use the comprehension and grammar, just only. What is your name? Ajay Sharma. Or they become formal. I am Ajay Sharma. ये I am वाला जो word है ना, ये तो निकाल ही देना चाहिए. अगर मैं ही आपसे पूछूं who are you, can you describe yourself? Anybody who is available for this to answer this particular question anytime, just write to me, who are you? So up to this point, we have finished this. Now I will stop sharing and these examples also and descriptors also. How do we make? What are the benefits? What different types of rubrics are there? Try putting them up. अब रही बच्चे को घर में कोई काम दीजिए. लड़की है उसको बोलिए रोटी बनाइए. लड़का है उसको बोलो डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम क्लीन करने के लिए. And then you set different criteria. नीडिंग ठीक हुई थी, डाउ ठीक बना था, रोटी गोल बनी है, सेकने के टाइम में इट इज evenly roasted on both the sides. 4 criteria, and then try assessing, try creating rubrics. Start from home. That is where the charity begins. I'll stop sharing the screen now, and if anybody has got any doubt, please do come up with your questions now. You can open up your screen, video, unmute yourself, and you may ask. देखिए, there is one madam Nirupama Ajay, एक और एक और है अजय, मनिका ठाकुर टू एवरीवन पी. अभी याद आ गया, लिख दीजिए सब लोग जो भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट. 29 are present, but the chat box there are only 19 people. ये सर ये नहीं है, सर्टिफिकेट तो मैं दे दूंगा सबको. But the only thing is that कि if any verification comes from CBSE, how do I prove कि whether you were present over there in the webinar or not? It is Nirupama Ajay Kale. Okay, ma'am. No problem. I can see. So if you don't have any questions, ideas, problems, suggestions, then I end up the webinar here. You will get the recording tomorrow morning, and as today, you get the certificate in the
afternoon. Shall we conclude, madam? Nobody to ask anything. All right, ladies and gentlemen, thank you very much to be present and boost up my morale by being present over here. Thank you. Have a nice day and nice sleep. Archana Shuklaji, thank you very much. I am ending the meeting now.